नमस्कार। मैं सीए मनमोहन जिंदल, रजिस्टर्ड वैल्यूअर इंस्टीट्यूट इन फाइनेंशियल एसेट्स एंड सोशल। Today we shall discuss clearing, settlement, and risk management. So, the process of clearing and settlement is as follows. The clearing functions of the clearing corporation is designed to work out. तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन का काम होता है क्लियरिंग फंक्शंस is designed to work out what trading member or brokers are due to deliver. कि ट्रेडिंग मेंबर ने और ब्रोकर्स ने क्या डिलीवर करना है, उनकी तरफ क्या ड्यू है, एंड व्हाट ट्रेडिंग मेंबर एंड ब्रोकर आर ड्यू टू रिसीव ऑन दिस, उनको क्या देना है और क्या देना है। मींस सिक्योरिटी दे करके पैसा लेना है या पैसा दे करके सिक्योरिटी लेनी। तो दीज आर दी टू फंक्शंस कि उन्हें क्या देना है, उनकी तरफ क्या ड्यू है, क्या उन्हें देना है और क्या उन्हें देना है। इन द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन दिस इज डन by a process of called multilateral netting. It is a very important question. इसके ऊपर तो क्वेश्चन आता ही है। This process is performed by clearing agency, means clearing corporation or clearing house. And the clearing agencies guarantees that all contracts which are traded will be honored. इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है, इस टाइप से भी आ जाता है। तो एक एक लाइन कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और उसके ऊपर पूरा का पूरा हमारा एक नंबर आधारित रहता है। सो क्लियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग ऑफ ऑब्लिगेशंस after which the obligations are discharged by the settler. तो सबसे पहले तो क्या ऑब्लिगेशन है, क्या ड्यू है, क्या देना है, क्या लेना है, और वह जब ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको सेटलमेंट कहा जाता है। A multilateral netting procedure is adopted to determine the net settlement obligations, means delivery receipt positions of clearing members. Accordingly, a clearing member would have either to pay in or pay out obligations for funds or security separately. So, सिक्योरिटी देना है तो उसका अलग ऑब्लिगेशन है, फंड्स देना है तो उसका अलग ऑब्लिगेशन है। तो इस टाइप से दोनों अलग अलग। सेटलमेंट इज ए टू वे प्रोसेस। सो दिस इज आल्सो ए क्वेश्चन कि ये सेटलमेंट टू वे प्रोसेस है, थ्री वे प्रोसेस है, which involves transfer of funds and securities on settlement of the debt. तो फंड का ट्रांसफर होना है और सिक्योरिटीज का सेटलमेंट होना है जो बेची या खरीदी गई है। सो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन also devise mechanism to handle various exception situations like security shortages, like security shortages or bad delivery, company objections and auction settlement. तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कभी कभार यदि सिक्योरिटी शॉर्टेज हो गया तो कैसे काम करेंगे, बैड डिलीवरी हो गया तो कैसे काम करेंगे, कंपनी ऑब्जेक्शंस हो गया तो स्थिति में क्या होगा, और ऑक्शन सेटलमेंट कहाँ कहाँ होता है। सो सेटलमेंट प्रोसेस इज इन इंडियन इक्विटीज मार्केट SEBI has given option to exchanges or clearing corporation to settle trade on trade plus 1 day or trade पर 2 day basis। जिस दिन ट्रेड हुआ उसमें आप एक दिन जोड़ेंगे या 2 दिन जोड़ेंगे। In case of T+2 rolling settlement, a transaction enter into on day 0 has to be settled on day T plus 2 working days when funds pay in or securities payout takes place.
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी दे देते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट में भी आ सकता है कि एक सिक्योरिटी 15/6/2023 को ट्रांजेक्ट हुई और इसका सेटलमेंट कब होगा। यदि T+2 डे है और बीच में एक दो वो हॉलीडे डाल देंगे तो उसके हिसाब से इसका मतलब यहाँ पर ये आना चाहिए कि वर्किंग डेज वी हैव टू बी केप्ट इन द माइंड। फॉर इंस्टेंस, ट्रेड्स taking place on Monday are settled on Wednesday, Tuesday trades settled on Thursday, and so on. Hence, a settlement cycle is a period within which settlement is। तो सेटलमेंट साइकिल बोला जाता है इसको कि जिसमें विद इन विच सेटलमेंट इज मेड। तो ये T+2 डेज का जो पीरियड है उसको बोला जाता है सेटलमेंट साइकिल। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। For arriving at settlement day, all intervening holiday, bank holidays, exchange and clearing corporation holidays, Saturdays and Sundays are taxed। यदि हम इस क्वेश्चन को यहाँ लें कि फॉर इंस्टेंस ट्रेड्स आर टेकिंग प्लेस ऑन मंडे आर सेटल्ड वेडनेसडे, परंतु यदि यहाँ डाल दे कि इसके बीच में एक संडे आ गया तो ये वीरवार को सेटल होगा। टू वर्किंग डे या संडे तो है ही, या मंडे का हुआ मींस यहाँ मंडे की अगर ट्यूसडे की अगर छुट्टी डिक्लेयर्ड हो कोई तो वो उसमें से एक्सक्लूड हो जाएगी, तो सेटलमेंट ऑन थर्सडे होगा। इस टाइप से भी वो क्वेश्चन बना करके डाल देते हैं कहीं। सो क्लियरिंग बैंक्स एंड देयर फंक्शन। क्लियरिंग बैंक्स क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। Clearing bank act as an important intermediary between the clearing members and clearing corporation, between a clearing member and clearing corporation। तो इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएरी का काम करते हैं। Every clearing member needs to maintain an account with any empaneled clearing bank at the designated clearing bank branches। तो हर क्लियरिंग मेंबर को अपना एक बैंक में अकाउंट खोलना पड़ता है, क्लियरिंग बैंक अकाउंट। The clearing accounts are to be used exclusively for the clearing and settlement operation। इसके अंदर और कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, सिर्फ क्लियरिंग एंड ट्रांसफर ऑपरेशंस ही होंगे, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑपरेशंस ही होंगे। It's the function of clearing member to ensure that the funds are available in his account with the clearing bank on the day of pay-in to meet out the funds obligation। यदि उसको कोई obligation funds का ट्रांसफर का है तो उसके खाते में भरपूर पैसा होना चाहिए, वरना तो बैकआउट होने की संभावनाएं हो सकती। In case of a payout, clearing member receive the amount on the payout। So all transactions of pay in or pay out of funds are carried out by these clearing funds। कितना पैसा आना है, कितना पैसा जाना है, इन सब का हिसाब, इन सब की पेमेंट क्लियरिंग बैंक के द्वारा ही होगी। The pay in obligation details are passed on the clearing banks by clearing corporation, who then debit the clearing member account, and based on payout instructions from clearing corporation, the clearing bank will credit the receiving member clearing account। So in case of cash market, this happens on T+2 or T+1। The clearing banks are required to provide the minimum services as specified the clearing corporation to clearing members। ठीक है साहब, क्लियरिंग बैंक को रिक्वायर्ड है कि मिनिमम सर्विसेज। नाउ कस्टोडियन, की कस्टोडियन का क्या रोल है। Custodian are institutional intermediaries who are authorized to hold funds and securities on behalf of large institutional investors such as banks, insurance companies, mutual funds, and foreign portfolio investors। They settle the secondary market trade for institutional investors। Several custodians are also clearing members and clearing banks of the exchange
and manage both funds and securities. What are the settlement obligations? Clearing corporation receives the details of trades and prices from the exchange. Settlement obligations are computed using predefined methodology specified for the segment and fund. So यहाँ पर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये प्री डिफाइंड है या ऑटोनोमस है या पोस्ट डिफाइंड है. रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. A comprehensive risk management framework is the backbone of the clearing agency, corporation, or the house. A clearing corporation house provides settlement guarantees, that is, the settlement of securities and funds will take place even if there is a failure by the broker. If there is a failure by the broker and clearing member to fulfill their obligation. तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन एक ऑनर करती है, गारंटी देती है कि जो सिक्योरिटीज का सेटलमेंट है, फंड्स का सेटलमेंट है, हर हाल में होगा, चाहे ब्रोकर में फेलियर हो, क्लियरिंग मेंबर चाहे फेलियर. In order to safeguard these such failure, the clearing agency is required to carry out risk management measures as specified by SEBI through its various services. In the equity market segment, brokers should have a prudent system of risk management to protect themselves from the client. So, इसमें margins are an important element of such a system. Margin एक बहुत बड़ा रोल प्रोवाइड करते हैं. तो इसमें डिफरेंट तरह के मार्जिन्स ये मेंटेन करते हैं. मतलब वेयर मार्जिन, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, मार्क टू मार्केट मार्जिन, डिलीवरी मार्जिन, special additional margin, or any other margin as prescribed by the exchange to be collected by the TM or CM from their clients. Trading member or clearing member. TM means trading member. So इस तरह के मार्जिन्स को वो मेंटेन करते हैं जिससे रिस्क मैनेज हो जाता है और यदि कोई डिफॉल्ट होता है तो उसका इफेक्ट मिटिगेट हो जाता है. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रिस्क कंटेस्ट मेजर्स इंक्लूड, अब इसके अंदर ये मेजर्स हम लोग यूज करते हैं कि कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मेंबर. ये कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स बनाए गए हैं कि उतनी मेंबर को रिक्वायरमेंट होनी ही हो. उसका मॉनिटरिंग ऑफ मेंबर परफॉर्मेंस एंड देयर ट्रैक. स्ट्रिंजेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट, पोजीशन लिमिट बेस्ड ऑन कैपिटल, online monitoring of member positions, and automatic disablement from trading when limits are reached. So, capital adequacy होनी चाहिए, लगातार मॉनिटरिंग होगी, कोई एक दो बार डिफॉल्ट कर गया तो उसको हटा ही देते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, स्ट्रिंजेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होता है और कैपिटल बेस पे ही उसको पोजीशन खड़ी करने अलाउड होता है और ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है. यदि मेंबर कुछ गलत करता है तो उसको ऑटोमेटिक डिसेबलमेंट हो जाता है. नाउ रोल ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन व्हेन a trade occurs on the stock exchange, it is legal contact between the buyer and the seller. जैसे ही हम इंटरनेट से, ब्रोकर के थ्रू और किसी माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड अकर करते हैं, मैच हो जाता है तो ये लीगल बाइंडिंग हो जाती है, लीगल कंटेक्ट हो जाता है बायर और सेलर के ऊपर. If there is a default by either the buyer or the seller, the counterparty to trade will have to bear the loss. यदि दोनों में से कोई भी आदमी गलती करेगा और उसको नहीं मानेगा तो उसको लॉस बियर करना पड़ेगा. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंश्योर्स दैट मेंबर्स मीट देयर फंड्स एंड सिक्योरिटी. तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन दोनों तरह के लोगों को जो फंड प्रोवाइडर हैं या सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं उनको एश्योर करती है कि उनके ऑब्लिगेशंस को मीट किया जाएगा. It acts as a legal counterparty to all trades through the process called novation. तो इस प्रोसेस को नोवेशन कहा जाता है कि दोनों तरफ को गारंटी दी जाती है. हमने नोवेशन के बारे में पढ़ा भी था इससे पहले कि
नोवेशन दोनों तरह की गारंटी रहती है। Thus, clearing corporation becomes the buyer to every seller and seller to every buyer. So this is the definition of innovation. The clearing corporation becomes the buyer to every seller and seller to every buyer. बीच में ये उसका काम। If there is a default in this scenario, clearing corporation being counterparty is responsible for the ensuring the settlement, thus managing the risk and guaranteeing settlement to both the parties. तो तीन तरह के फंक्शंस ये करती है कि is responsible being the counterparty is responsible for ensuring the settlement, thus managing the risk and guaranteeing the settlement to both the parties. तो ये तीन फंक्शंस इसके क्लीनिंग कॉर्पोरेशन के रहते हैं एज ए काउंटर पार्टी। In a multilateral netting scenario, when a default occurs, it is difficult to unwind the trade to find the original counterparty who will have to bear the loss. So, the process of novation addresses this risk. In India, in equity segment, there are three clearing corporations. Number one, the Nestle Clearing Limited, Indian Clearing Corporation Limited, और मेट्रोपॉलिटन क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। समटाइम हम उससे डिपॉजिटरी से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके अंदर क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन में इसका ध्यान रखना है। वो एनएसडीएल और सीएसडीएसएल है डिपॉजिटरी, यहाँ पर ये क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन है। ये देखिए नोवेशन इसको कहा जाता है एज पर दी डेफिनेशन गिवन इन दी सेबी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रेगुलेशन 2018. Novation means the act of clearing corporation interposing itself between both the parties of every trade, being the legal counterparty to the both. Means the clearing corporation becomes the buyer to every seller and seller to every, क्योंकि बीच में रहता है। Auction of securities. An auction is resorted to when there are shortages in delivery by the seller broker. This mechanism is utilized by the clearing corporation to fulfill its obligation towards the buying trading members. Thus, when the selling broker fails to deliver these shares, the clearing corporation through the stock exchange system conducts an open market purchase. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि ओपन मार्केट परचेज रहता है, ये क्या है? By way of open auction and shares bought through the auction are delivered to the buying broker. इसके ऊपर भी आ जा सकता है कि यदि ऑक्शन हुआ तो उसकी डिलीवरी किसको जाएगी? बाइंग ब्रोकर को जाएगी या सेलर ब्रोकर को जाएगी। एंड एडिक्वेट पेनल्टीज आर लेविड ऑन द सेलिंग ब्रोकर्स। तो इसमें से ही 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं और आ जाते हैं। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस कि मार्केट ऑर्डर्स आर ऑफ एनी टाइप। मार्केट ऑर्डर कितने प्रकार? तो हमने पिछले दिनों पढ़ा था कि मार्केट ऑर्डर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनप्रोटेक्टेड और दूसरे प्रोटेक्टेड। मार्केट ऑर्डर विद प्रोटेक्शन और मार्केट ऑर्डर विदाउट प्रोटेक्शन। In case of a trader need to specify the price at which the trade need to be executed, तो लिमिट ऑर्डर इसमें हमने देखा था कि एक स्पेसिफाइड लिमिट डाली जाती है, उस पर आने तक ही वह शेयर या खरीदा जाता है या बेचा। Are the institutional intermediaries who are authorized to hold funds and securities on behalf of the large investors? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा कि these are the custodians.
An auction is resorted to when there are shortage in the delivery by an seller broker. Seller broker जब डिफॉल्ट करता है तो ऑक्शन का प्रोविजन किया जाता है. So thank you very much. We shall discuss chapter 3 in another video. Thanks for your patience listening. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.